Good morning from Chandigarh. Time right now is 6 a.m. Now I am leaving for Manali. यहाँ से लगने वाले हैं around roughly 10 hours, 9 to 10 hours. वाइफ को ऑलरेडी बस चढ़ा के भेज दिया है रात को ही. मैं निकलने वाला था 3 या 4 बजे, बट इट्स रेनिंग हियर. अभी भी बारिश गिर रहा है, बट आई हैव रेन गियर, सो बैग्स ऑल आर वाटर प्रूफ एंड रेन गियर पहन लेता हूँ और निकलते हैं. तो फाइनली रेडी, सब कुछ लगेज बांध दिया है. It says it's gonna take 7 hours 36 minutes to cover 294 kilometers to Manali from Chandigarh. But this hotel, the hotel Chandigarh Bakun, is very good, like very good. This city feels like complete BHL area in Hyderabad, where I live. It's a very well planned city. There is one problem I am getting now, which is the helmet visor. उस पे पिन लॉक नहीं है, जिसके वजह से पूरा फॉग हो रहा है. थोड़ा ओपन करके रखना पड़ेगा to get that moisture out. चलो पहले निकलते हैं सिटी के बाहर. Then we'll see where to have breakfast, क्योंकि यहाँ पे तो सब बंद है. This city looks a bit isolated, like ज़्यादा लोग नहीं. अभी ब्रेकफास्ट भी हो गया है. टाइम इज़ 8:20. पंजाब का फेमस पराठा. थोड़ा हेवी हो गया है, बट चलेगा. पता नहीं लंच होगा या नहीं. पेट भर के ब्रेकफास्ट ही कर लिया है. थोड़ी देर में पहाड़ भी चढ़ना शुरू हो जाएगा. एक बार वो शुरू हो गया तो रुकने का मन नहीं करेगा. I can see curves on the map as well as the road. I heard that the road is pretty bad due to the construction. अभी जो ये ट्रिप में है, ये रोड 3 बार करूँगा. लाइक एक बार ऊपर चढ़ना और 2 बार नीचे उतरना. You will know why. यहाँ पे कुछ टनल बन रहा है. Oh my God, this accident looks so scary. The temperature has already dropped quite a bit, क्योंकि आज वेदर बहुत बढ़िया है. हेलो मंकी. थैंक गॉड धूप नहीं है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है. टिल नाउ completed 150 kilometers from Chandigarh. There is more of a downhill than uphill till now. पता नहीं कब एक्चुअल शुरू होगा ऊपर चढ़ना. From last 5 kilometers the road is very good with 4 lane. I don't know till where it is. The view is getting better and better. मंडी में यहाँ पे KTM शोरूम और सर्विस सेंटर है, जहाँ पे मैं चेन क्लीन और लूप करवाया, बिकॉज बहुत ड्राई हो गया था और ऊपर से थोड़ा लूज़ भी हुआ था. बट द टेक्नीशियन इज़ नॉट देयर टू टाइट इट. मंडी में हूँ. देयर आर 2 रूट्स एक्चुअली.
देखते हैं कौन से रूट में जाना है. We might find a jam on the main route. There is a full jam here. Don't know why. I think there is a landslide happened. Oh my god. Don't know till where the traffic is. अच्छा, आई थिंक इसके बारे में बात कर रहा था वो KTM सर्विस सेंटर वाला. So let's see till where we can go. Man, the jam is very long, almost 2 kilometers. And the opposite side also it's the same case. Don't know what is going to happen now. There is a chance of a landslide here. A few moments later. There is another route which goes to Kullu और वो है मंडी IIT साइड से. तो वहीं से जा रहे हैं. I think there are a lot of people who are coming on this way because of that landslide. 100 किलोमीटर है और 4 बजे पहुंचूंगा. Estimated travel time is 3 hours. Wow, this route is amazing यार. बहुत स्टीप है रोड और ये नीचे उतर रहा है. एंड यू कैन सी अ वैली काइंड विच इज़ वेरी डीप. बहुत डेंजरस है ये स्टीप. आई थिंक ये है IIT मंडी. बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे सिचुएटेड है. Man, it is so beautiful. This IIT campus is very beautiful. This road is a bit danger at night, especially because you can see here there is no boundary. पहले रोड अच्छा था, उसके बाद खराब रास्ता आया. अभी तो रास्ता ही नहीं है. वाओ, स्नो कैप माउंटेन्स वहाँ पे दूर में दिख रहे हैं. और भी आने वाले हैं सामने जाके. 1 hour later. We are finally back on the highway. अब बचा है फाइनल 53 किलोमीटर्स को लगने वाले हैं 1 घंटा. Manali is 37 and Rohtang 91. Leh 512. I will be in Leh in another 2 weeks. Yes, I think this is the spot for river rafting. बहुत सारे लोग हैं. अब लग रहा है मनाली आए हैं. This is how it should be. हर जगह पे पहाड़ 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 पहाड़. Next time we have to come in April. मार्च और अप्रैल में आना चाहिए. तब आधा स्नो कैप माउंटेन्स दिखेंगे. That would be more beautiful than complete snow or complete non-snow mountains. I think the green tax is not for bikes. This is the cottage which I have booked. Golden apple. But let's see how the service would be. I just came into the room. I'm gonna show the view from the balcony. This is the balcony. But check this out.
here, here, and here.